आइसोलेट करते हैं, ग्रो करते हैं। अब उस कल्चर का इम्पोर्टेंस कब होगा? जब वो कोई मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा। मेटाबोलाइट स्ट्रेस कंडीशन में भी प्रोड्यूस हो सकता है और नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है। जब स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है तो वो कहलाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और जब अगर नॉर्मल कंडीशंस में हो रहा है, उसकी ग्रोइंग कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपका फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करते हैं, लाइक बैच, फेड बैच एंड कंटिन्यूस। तो बैच फर्मेंटेशन कब होता है? व्हेन यू नीड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कंटिन्यूस कब होता है? व्हेन यू नीड प्राइमरी। तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली आप फीड करते रहते हो। बैच में क्या होता है, आपने सब कुछ स्टार्टिंग में ही सारा कुछ डाल दिया, सबस्ट्रेट डाल दिया स्टार्टिंग में, एंड देन एंड में जब बैच खत्म हुआ तब आपने प्रोडक्ट को हार्वेस्ट कर दिया। फेड बैच में क्या होता है, आप उसको स्टेप्स में फीड करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली फीड करते रह रहे हो, बट स्टेप्स में फीड करते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्लास्क, हम डायरेक्टली फर्मेंटर्स में नहीं आते, वी स्टार्ट फ्रॉम फ्लास्क, जहाँ पे फ्लास्क में वी स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 25 ml, 100 ml, 500 ml, देन वी गो इनटू लीटर्स। पहले हम फ्लास्क में कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लेके जाते हैं फर्मेंटेशन में, मीडिया में, मतलब फर्मेंटर्स में लेके जाते हैं। फ्लास्क में करने का पर्पस क्या होता है? फ्लास्क में आप करते हो टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा मेटाबोलाइट है। तो वहाँ पे आप ग्रोथ काइनेटिक्स करते हो, फर्मेंटेशन काइनेटिक्स करते हो, वहाँ से आपको समझ आता है कि ओके दिस इज़ नॉट प्राइमरी, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। वो टाइम बेस्ड काइनेटिक्स होता है। उसके बाद डिटरमाइन करने के बाद उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि अगर जैसे आपको एंटीबायोटिक चाहिए, आपको उसका टेस्ट करना है कि ये एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है और किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। आपको कई ज़्यादा वॉल्यूम में चाहिए होगा एंटीबायोटिक, उसका कंटेंट जैसे 1 mg में तो आप सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसका क्या करना पड़ेगा हमें? प्रोडक्शन। जब हम फर्मेंटेशन में आते हैं, बैच चलाते हैं फर्मेंटर्स के, तो वहाँ पे हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, बट इनिशियल लेवल में फ्लास्क में हम ऑप्टिमाइज़ ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो हम बस फर्मेंटर में क्या करते हैं, उन्हीं कंडीशंस को लेके हम बैचेस चलाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्मेंटर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 लीटर्स, 50, 100 एंड देन 500 ऐसे। तो इसका मैं बता देती हूँ, आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने फर्मेंटर्स देखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि किसी ने देखा है। फर्मेंटर, इसमें आपका सारा मीडिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एंड इसको पूरा स्टेरलाइज किया जाता है। दिस इज़ ऑल ओल्ड सिस्टम, दिस इज़ नॉट इन फंक्शन राइट नाउ। दिस इज़ यहाँ से दीज आर डिफरेंट सिस्टम्स, यहाँ से आप pH टेम्परेचर प्रोब्स डालते हो, एंड ये सिस्टम से अटैच होता है टू मॉनिटर द कंडीशन। दिस इज इनलेट एंड दिस इज आउटलेट। उसके बाद इसमें होते हैं अलग अलग एम्पेलर्स होते हैं। एम्पेलर्स का काम क्या होता है? आपका जो एरेशन, बेसिकली एरेशन को, कि आपका जो कल्चर है वो सेटल ना हो जाए, उसको कंटिन्यूसली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और जो एयर है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। तो वो काम करता है आपका एम्पेलर। जो RPM हम इंक्यूबेटर में देते हैं, वो काम एम्पेलर का यहाँ। फिर स्पार्जर होता है, बैफल्स होते हैं, ये एरेशन के लिए होते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स के लिए होते हैं। तो ये सारे ओल्ड सिस्टम हैं। न्यू सिस्टम्स जो आप देखोगे 5 लीटर्स में देखोगे, उन सब के साथ अब स्क्रीन्स अटैच होती हैं, वहीं पे आपके सारे कंडीशंस दिखते हैं कि कब pH बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ फर्मेंटेशन। दिस इज़ बेसिक, यहाँ पे आपको लार्ज स्केल मिलेगा। सो एट द बैक साइड, इसके पीछे ये MTCC, सिमिलर टू MTCC, दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू फैसिलिटी, CGMP फैसिलिटी। फिर जब आप इधर से मूव करोगे तो वहाँ पे आपको लार्जेस्ट फर्मेंटर दिखेगा, विच इज़ 1 kl फर्मेंटर। 1 kl इज़ 1000 लीटर। फिर व्हेन यू मूव आउट यू विल सी स्मॉल फर्मेंटर्स जो कि 5 लीटर वाले। वहाँ पे आपको क्लियर डिपिक्शन होगा कि एक्चुअली सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्योंकि दिस इज़ मेटल बॉडी, वो क्या है, दैट इज़ ग्लास बॉडी। तो उसमें आपको जो भी एम्पेलर्स, स्पार्जर, जो भी पार्ट्स हैं वो आपको क्लियर है। तो अभी ये 500 लीटर्स वाला आप विजिट करके देन निकल सकते हैं। 200 है ना, तो 50 पे करना है, 100 पे करना है, 200 पे ग्रो करना होगा। So these are like
फुल जो उनको चाहिए उनका है। फिर हमारा क्या ऊपर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सामने हमारे यहाँ पे क्या मॉड्यूलर लैब्स का एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, हर बंदा नहीं, हर साइंटिस्ट नहीं बाय कर सकता, तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन के छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, उसमें काफ़ी तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो सेंट्रल फैसिलिटी एंट्री करें, लॉकबुक एंट्री करें और अपना ज़्यादा ज़्यादा टाइम रिजर्व करना है, कुछ ऐसी बात है, तो यू कैन यूज़ दैट। बेसिक फैसिलिटी एक लैब में सेटअप हो गया है, बड़ी चीज़ें तो कॉमन। Please come this way. Straight from. Yeah. Please come. Yeah. So our department is a biochemical engineering. So here this is called as a fermentation lab. So in IMTECH we have 3 national facilities. One is bioinformatics center, one is fermentation center, right? And we have one more immunology, like other centers are there. So in this fermentation lab, we work on microbial production of recombinant proteins, enzymes, probiotics, prebiotics, and industrial enzymes. बच्चों अब like have you seen before the fermenters or bioreactors? So these are the bioreactors. These are the Japanese bioreactors. Bioreactor is a vessel which gives a controlled environment for the growth of your microorganism. The microorganism can be your E. coli or yeast, Pichia pastoris, fungus, right? Any other organism you can say, probiotics, bacillus, any host you can grow. You can grow in the fermenter. What is the ultimate, your aim? You want to produce a product, whether it could be a protein or enzyme or DNA, which is an intracellular or extracellular. Okay, so there are intracellular products, there are extracellular products. So in this lab, we have developed 3 technologies. One is natural streptokinase. Streptokinase is a blood clot dissolving enzyme. Second one is a recombinant streptokinase technology, and third is clot specific streptokinase technology. So what are the differences in these 3 generations of the streptokinase technology? First generation, it comes from the wild type. Wild type means it's a Streptococcus epimeles, which has been isolated from the saliva, streptococcus. Since it's a clinical isolate, it gives a streptokinase enzyme of 80 milligram per liter, 80 to 100. So we cultured from the shake flask, from the small level 5 liter, 30 liter, and to the 100 liter. So from 100 liter, the yield concentration is 100 milligram per liter. Through the fed batch, we increase the yield by 2-fold, 200 milligram per liter. Now, the second generation is, we took the gene, we cloned into the E. coli and yeast to produce it in a large scale. That means we got 800 milligram, that means 10-fold higher. Instead of 80 milligram, right, to 100 milligram, we got 1 gram per liter. That means 10-fold increase. So, through the fed batch, we increase the cell density, right, to 100 OD, and we produce that titer, that concentration, and that is 1 gram per liter. So, in 100 liter, that means 1 gram per liter, how much total concentration will get it from the 100 liter fermenter? 100 grams. So we got nearly 100 grams. What is the difference in the high value fermentation products and low value? For example, if we are producing insulin from the 100 liter fermenter, so from the 100 liter fermenter you have the same titer, 1 gram per liter, 100 grams you are getting. So 100 grams into 1000, that means 1 lakh mg. So 1 mg per vial, so 1 lakh vials. How much is commercially the insulin is sold in the market? Any pharmacy shop? 100 rupees, 200 rupees. If you make from the 200 liter fermenter a 1 gram per yield titer, you are getting it around 200 grams into milligrams. It is a 2 lakh vials, 2 lakh milligrams. So 2 lakh vials, 2 lakh vials. That means it is a high value. How much we can sell it? 2 lakh, 1 vial is 100 rupees. If you make a 2 lakh vial, 2 crores, 2 lakh, 20 lakh and 200 lakh. So 2 crore vials from the small 200 liter. Those fermentations are called, small volume, high value products. Now, you want to produce an enzyme, alpha amylase, protease, which has been used for surf excel and aerate, right? You know that. What are the detergents, enzyme? Lipase, cellulase, protease.
for this, if you want to produce in kilogram to tons, right, you have to culture it in the 2 lakh liter fermenters. How much volume? 2 lakh liter. So high volume, the value 1 kilogram goes for 500 rupees and 1000 rupees. So those are called as high volume but low value. The one which I told you about, insulin, monoclonal antibody, these things are low volume but value is very high. So when you do the process scale up for the fermentation process which enters into the technology transfer, commercialization and to the market, start from the petri plate to the shake flask, 50 ml, 500 ml, come this. And to the fermenter, can you see here the fermenters here? Fermenters, 3 liter, then 30 liter, okay, 50 liter and 100 liter. So this is a scale up process. Start from petri plate to the shake flask and to the fermenter, small volume and large volume. From there you will do all the process like harvesting. If it is an intracellular, if your insulin is intracellular, you lyse the cell, take out the material, protein with other materials, you solubilize, then you can get the biological activity, purify it, then do the toxicity studies in the mice, clinical trials, phase 1, phase 2, phase 3 and product launch. So the innovation phase, the stages, the time spent in the research laboratory or university took nearly 10 years to develop the product to reach the market. Whereas in industry, that is very short. 3 to 4 years, they develop the technology. In this BIC, we call it BIC, the Bioinformatics Center, and I will tell you a little bit about the center. So the Bioinformatics Center, of course, the first thing we need is the computational power. So the computational power is housed in this data center, in this building that is called data center. So a lot of computer servers are there, and while I will explain a bit more with the help of this poster, you can come forward also. Like this center was established, one of these first centers, such centers by DBT in 1987. There were 8 or 9 such centers in India, and that is one of the first here. And so what kind of work people do here? Like one of the area is AMR. AMR, you know, I think people from microbiology, antimicrobial resistance. So why the bacteria or any microbe for that matter becomes resistant to antibiotics. So that is one of the problems that the faculty are trying to address here. Then there are escape organisms. So what are escape organisms? They are also abbreviations. Each letter is abbreviation for a microbe, like Enterobacter, Staphylococcus, similarly, Acinetobacter baumannii. So they are on the priority list of WHO. So the WHO release a priority list that which microbes are most challenging target to and for antimicrobial resistance. So we need to focus on these microbes more on the priority basis. Then in the whole of institute, a lot of research is going on Mycobacterium tuberculosis. All of the institute, and here also at BIC we work on MTCC. Then there are the data, big data problems like system biology. We study the any cell or organism or tissue at the system whole level. Then there is next generation. There are faculties that are working on next generation sequencing, and of course they use artificial intelligence and machine learning nowadays for data analysis. So these are some of the resources that. So this tells you that all over the world, the resources that are developed here, they are accessed by the people all over the world, and so this is like if you want to see a prototype of a cluster, like I have sent you, I have told that there are many web servers. So this is what the web servers look like. It is actually a multi-node clusters. So there are cluster of nodes. So there are different nodes, and in these nodes there are multiple CPUs that you can say there are cores, like here written also. So this is the
basis of this computational power, है ना, web servers. So there are lot of such servers, and they are dedicated servers for specific work like genomic server or server for structural biology. And on the same lines, the work is done here like the genomics, proteomics, and the structural biology work. Structural biology work, we do modeling and simulations, MD simulations on proteins. And some of the unique facilities here are this 3D printing. So 3D printing, this is an instrument that you give it a model that you want a 3D model of anything. You specify it and it can give you, like if you specify that I need a double helix model, you give it a file and it will give you a model, hard model that is made of double helix, DNA double helix. Yeah. And then there is virtual reality lab also here, that was also established very long back. So virtual reality lab is just like we in cinema we view these 3D movies, and so this is just like this, but we can use it to view the molecules like the DNA at atomic level and in 3D view. So how the two molecules are interacting or how they look into 3D view. So we can see, of course we need the binoculars like this चश्मे जो हम वहाँ पहन रहे हैं ना, the same we need here to look into this. There are some people also you can see, na? There are foreigners here. Yes, President of India then, Abdul Kalam also visited this facility, and there is a photograph also. So this is the team that is working here right now, the faculties and the students, PhD students, and if you have any question, you can ask.